Again, this is question number 13. Duties of mine manager in case of serious accidents in mine are. Read the questions and answer it. देखो, बड़ा क्वेश्चन देख के कभी डरना मत कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतना ही आसान होता है वो क्वेश्चन. ठीक है? सो नेवर बी फियरफुल, नेवर बी स्केयर्ड आफ्टर लुकिंग a lengthy question. If the question is big, answer will be very very easy, क्योंकि इसमें सब कुछ लिख दिया, कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे. है ना? ये छोटे छोटे ट्रिक्स को ना आप एग्जाम में, I just tell you, you apply all those tricks which I am talking about in your exam and you will easily, very easily qualify the exam. बहुत आसान एग्जाम है. Right? So answer is of course E. मैंने आपको पहले ही बोला है, 10 क्वेश्चन E का टिक करोगे ना, 2 गलत होगा, बाकी 8 सही होगा. ऑफ कोर्स ये सारे अप्लाई तब करना जब आपको किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, लेकिन जब पता है तो आपको तो राइट आंसर पता ही होता है. ओके, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन नंबर 14. सो यू रीड इट एंड आंसर इट. अभी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड आंसर. आई वांट टू सी कि कितने लोग इसको सही करते हैं. आर यू डेवलपिंग द विजडम विच आई वांट टू इनकलकेट इन यू, और सिंपली आप बस वर्ड देख रहे हो और रट रहे हो? आप क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेन एग्जाम नहीं है. अगर आप गलत भी करते हो दैट डजंट मैटर एट ऑल. आप अगर जवाब देते हो इस क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा और आप सही करके आओगे. सो इस बात से आप टेंशन मत लो कि आप गलत दे रहे हो सही दे रहे हो. जवाब दो आप. यू जस्ट राइट द आंसर. Okay, so now see the answer. Answer is B, 1, 3 and 4. बहुत खुशी हो रही है मुझे देख करके. मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव आंसर्ड B. इसका मतलब है कि आप कुछ तो एटलीस्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हो. वेरी गुड, एक्सीलेंट. You just read these lines. Am I audible? Yes. Okay. So just read this line. To identify a person who should be blamed. ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी होना भी चाहिए कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हो कि किसको ब्लेम देना है, किसको जबरदस्ती ब्लेम करना है. तो इसका मतलब 2 नहीं हो सकता. आंसर में 2 नहीं हो सकता. तो आप ये भी एक ट्रिक बता रहा हूं, समझो इसको. आंसर में 2 नहीं हो सकता, तो आप इसको काट दो, ये तो आंसर होना ही नहीं है. आप इसको काट दो, ये तो आंसर होना ही नहीं है. तो इसका मतलब कि अब आपको सिर्फ 3 में से चूज करना है. राइट? Recommend corrective actions to prevent occurrence of similar accident. Identify the root cause of accident. अब बताओ, if you are doing investigation into accident, you should definitely identify the root cause of accident. So इसका मतलब 4 will be the answer. 4 will be the answer. तो अब ये भी नहीं हो सकता. तो आंसर हो गया B और E. Only B और E. Now you are 50-50 कि अगर आपको नहीं भी आता है, B और E में भी टिक कर दोगे तो आपका 50% चांस है कि आप सही हो जाओगे. ओके, ऑब्जेक्टिव एग्जाम इज नॉट जस्ट giving, not just ticking the right answer, it is also regarding eliminating the wrong answer. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन को टिक करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट गलत ऑप्शन को बाहर करना है. तो मैंने अभी सिर्फ देखो, अभी मुझे नहीं पता किसी इस पूरे चीज के बारे में, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये शुड बी ब्लेम्ड, ये वर्ड ही इतना निगेटिव है, इसके आधार पर मैंने 2 ऑप्शन अलग कर दिए. 4 तो मुझे करना ही करना है, मैंने वो किया. तो अब मैं पहुंच गया 50-50 पे कि सिर्फ बी और ई में आंसर होंगे. अब आप देख लो. टू पनिश द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट. आप किसी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और किसी को पनिश करोगे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. तो 5 भी नहीं हो सकता. आंसर विल बी बी. तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ना, आपके पास को बहुत, मैं आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल
जिनके पास बहुत नॉलेज है, माइंस एक्ट का ना एक एक लाइन उनको याद है, उनको CMR, MMR, उनको हर चीज का एक एक लाइन याद है, बट वो एग्जाम देने जाते हैं और फेल होकर आ जाते हैं। क्या लगता है आपको रीजन? कि नॉलेज तो था फिर भी फेल कैसे हो गए? क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। सिर्फ नॉलेज से अगर एग्जाम पास हो जाता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु वर्क वेरी हार्ड, बट स्टिल फेलिंग द एग्जाम। व्हाई? बिकॉज नॉलेज एंड स्ट्रेटजीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी भी सही होनी चाहिए। मैंने आपको ये अभी जो बता रहा हूँ ना, ये सब बीच बीच की स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, राइट? सो यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। ये उसी जब जो मैंने सिलेबस शुरुआत में बताया था ना, the syllabus which I have written in the first slide, we are covering those syllabus only. So what are the cost of accident? At the end of the class I'll summarize what we have studied today. क्लास के लास्ट में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि हमने क्या पढ़ा। ओके, सो दीज आर द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। व्हाट इज इट? कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट क्या है? सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो बहुत फर्क से। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट को होगा ना तो कुछ खर्च होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी को कॉस्ट बोलते हैं। कि उस एक्सीडेंट का ना इतना कॉस्ट है। व्हाट इज इट? Effects on the cost of a company that would not have been borne if the injury or accident had not taken place. कहने का मतलब ये है कि किसी कंपनी को पर वैसा कॉस्ट जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होता अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो। ठीक है, माइंस नॉर्मल चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। माइंस में एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया, पता चला कि एक मशीनरी खराब हो गई या एक मशीनरी जल गई, कुछ भी हो गया जिसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए थे। So all that money which is spent, why? Due to occurring of an accident is called cost of accident. Okay, it can be two types, direct cost और indirect cost. Direct या indirect का मतलब क्या होता है? मतलब है tangible और intangible. Direct cost ना आपको दिख रहा है, you are able to see that this is a cost. और what is indirect cost? Indirect cost मतलब वो actual में आपको नहीं दिख रहा है, but वो cost कंपनी के ऊपर पड़ गया है। एग्जाम्पल सिंपल सा बताऊं आपको। सपोज यू, भगवान ना करे, बट सपोज मान लीजिए कि कोई आदमी एक दिन के लिए बीमार हो जाता है, ठीक है, और माइंस पे नहीं जा पाता है, तो व्हाट इज द डायरेक्ट कॉस्ट? जो वो मेडिसिन लेगा या जो भी इलाज कराएगा, दैट विल बी द डायरेक्ट कॉस्ट। व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट कॉस्ट? वो काम पे नहीं जा पाया और एक दिन का पैसा नहीं कमा पाया, सो दैट विल बी द इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो वैसे एज सच डायरेक्टली दिख नहीं रहा है बट वो हुआ है। Okay, so direct cost means those costs which are tangible and which can be measured. आपने दवाई खरीदी 50 रुपए की, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, चलो समझ में आ गया। एंड इनटेंजिबल, दोज कॉस्ट विच आर इनटेंजिबल, सामने सामने नहीं दिख रहा है, एंड कैन नॉट बी मेजर्ड वेरी इजिली, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी एग्जांपल्स के साथ देख लेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ इंजर्ड पर्सन, मैंने बताई थी आपको कि जो डायरेक्टली दिखे, कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ कंपेंसेशन, कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डैमेज टू प्लांट इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जो है दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट कॉस्ट। एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स रिमेनिंग आइडल फॉर लॉन्ग टाइम, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और आप मशीनरी को यूज नहीं कर पा रहे हो, तो नहीं यूज कर पा रहे हो तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो पैसे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। रिक्लेमेशन ऑफ माइंस में मान लो कि डंप फेल्योर हो गया और माइंस में फिर बहुत सारा वो वर्किंग के लायक नहीं बचा, आपको डंप्स को हटाना पड़ेगा, यू हैव टू क्लियर द मक, यू हैव टू क्लियर द डंप टू स्टार्ट वर्किंग अगेन। सो फॉर दैट यू हैव टू मींस आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली तो वो एक्सीडेंट के साथ अटैच नहीं है, बट इनडायरेक्टली एक्सीडेंट के साथ अटैच है। क्यों? इफ दैट एक्सीडेंट हैज नॉट बीन अकर्ड, सो दैट कॉस्ट वुड नॉट हैव बीन देयर। लॉस ऑफ मोरल, ऑफ कोर्स मोटिवेशन कम हो जाता है लोगों का, ट्रस्ट कम हो जाता है, काम को लेकर के डिवोशन कम हो जाता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर called indirect cost. And believe me, of course it has been derived that indirect cost is much higher than direct cost, nearly 6 to 8 times for mining industry I have written. Of course it can vary up to 20 times, 25 times. So indirect cost is multiple times as compared to direct cost, and I have given a picture. See this tip of the iceberg. You have means heard a proverb, na? Tip of the iceberg. So this is the part which is visible, so this is direct cost, and this is the part which is beneath water and not visible, so it is indirect cost. Okay, so the indirect cost is much higher as compared to direct cost.
क्या होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट, मैंने बता दिया। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली दिखे कि उसमें से पैसे लग गए, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो एज सच यू आर नॉट एबल टू सी डायरेक्टली बट एक्चुअली दैट कॉस्ट हैज हैपेंड, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट? So come to the next topic for today, and this is workers participation in safety management. Okay, it can be either statutory, ये सारी चीजें भी आपने पढ़ रखी है, it can be either statutory or non statutory. Statutory और non statutory वर्ड का मीनिंग तो आता है ना पता? अगर नहीं है तो मैं आपको समझा रहा हूं। Statutory means something that has been written in act, has been written in act or regulation or rules, means it is written in some kind of legislation, then that is called statutory. What is non-statutory means it has not been written in such act or legislation, but yes, some arrangements are there which exist, so those are called non-statutory. Means if it is statutory and if you fail to do so, then you will be punishable, you will be punished as per legislation. Non-statutory है मतलब आपने अगर नहीं किया तो एक्ट में कोई पनिशमेंट नहीं लिखा हुआ है। नॉर्मली आपको हो सकता है कि कंपनी बोले कुछ, मतलब कंपनी की अपनी पॉलिसी हो तो वहां पे आपके लिए कुछ पनिशमेंट हो सकती है, बट एज सच दैट इज नॉट रिटन इन द एक्ट। ओके, सो व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन व्हिच वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज इंश्योर्ड? So section 12 committee, you already know that there are 2 persons representing the interest of miners. There is fifth safety committee, it is written in the mines rule. Then workmen's inspector, it is of course mentioned in the mines rule. So these 3 are the statutory participation. What is the non-statutory participation? The number 1 is tripartite safety committee. In parlance, in normal parlance, you already means you say that National Safety Conference on mines. Then it may be company safety board, it can be standing committee on safety by say Ministry of Mines, Ministry of Labor. So these things are written in the legislation, these things are not written in the legislation. So if things are written in the legislation, it is called statutory. If it is not written in the legislation, that is called non-statutory, right? So I guess it is clear too कि statutory तरीके से भी बोला गया है कि वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवाना है सेफ्टी मैनेजमेंट में, और नॉन स्टैट्यूटरी भी कंपनी अपने लेवल पे कर सकती है, जिसमें ये इंश्योर करे, कंपनी कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकता है कि जिसमें ये इंश्योर करे कि वर्कर का पार्टिसिपेशन सेफ्टी मैनेजमेंट में हो, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन डीजीएमएस एग्जाम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट? Pit safety committee, section 12 committee, tripartite committee, option A, B and C, and none of the options. Okay, so read the question and answer it. Arjun Mitra is written F. So where is the option F? Of course, that may be mistyping. Answer is D. Well done. You all have written D. So that is the answer. Okay. And someone, Mukesh Singh, has raised hand. Okay, wait. मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर आपको लास्ट में ना जो भी आपके डाउट है उसके लिए मैं आपसे पूछूंगा। मुझे पता है, I am teaching you all those things which are required. So please listen to me first. लास्ट में आपकी क्वेश्चंस को मैं लूंगा, कुछ जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट इंटरप्शन, इसलिए पहले पढ़ लीजिए। किसी ने लिखा है, ओके, समवन हैज रिटन दैट lot of other things are included in indirect cost. So of course lot of other things are included in indirect cost. These are just examples which I have written here. Okay, so these are just the examples which I have written here. इसलिए तो मैंने आपको समझाया ना, इसलिए that is why मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि I am trying to give you wisdom. Why I have told you direct cost means those things which are tangible, which can be measured. Indirect cost means those things which are intangible, which cannot be measured. अब इतने सारे कॉस्ट पॉसिबल है तो सारी चीजों को हम मेंशन नहीं कर सकते, बट इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू टेल अबाउट एनी न्यू वर्ड और लाइन व्हिच कम्स टू यू, राइट? सो आई होप दैट इज क्लियर. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ISO. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप ये समझिए कि ये कंपनी लेवल पे होता है. ओके, दिस इज एट द कंपनी लेवल, राइट? This is at the company level. Okay, this is at the company level. So it has been recommended in 4th National Safety Conference and then it was elaborated in 5th National Safety Conference. So directly यही question आपसे पूछा जा सकता है कि internal safety organization
was recommended in which national safety conference? Answer is 4th. Okay, and then it was, and subsequently it was elaborated in 5th national safety conference. So आंसर होगा 4th. अगर ये पूछा जाए कि इंटरनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बताया गया, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? सो व्हाट डज नेशनल 4th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस स्टेटेड? The statute should be made rigorous with a view of achieving higher standards of safety. Mine management should develop their own internal safety organization. इसलिए मैंने बोला ना, it is at the company level. Mine management should develop their own internal safety organization, which should be placed directly under the charge of managing director. Okay, so this is very important organization, that it should be the head person of internal safety organization will be a responsible person, like managing director, like director. Okay, the new strategies should be planned to achieve the goal of reaching zero accident potential. Directly इसको भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ZAP means zero accident potential. ओके, सो इन सारी चीजों के बारे में 4th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ने आईएसओ के बारे में बताया. ओके, देन 5th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ने इन्हीं सारी चीजों को एलिबरेट किया, राइट? सो आई विल गिव यू 1 minute. फर्स्ट ऑफ ऑल, read all these lines. These are written in very simple and crisp language. 5th national safety conference, the internal safety organization should be independent of production line at all level. ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन लाइन एट ऑल लेवल. कोई प्रोडक्शन का आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. द चीफ ऑफ आईएसओ शुड बी सीनियर ऑफिसर, नेक्स्ट ओनली इन द रैंक ऑफ डायरेक्टर टेक्निकल. मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो सकता है, होना चाहिए एक्चुअली. ठीक है, आईएसओ शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का क्या मतलब है? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मतलब ये है कि इन आईएसओ पर्सन्स फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स लाइक माइनिंग और नॉन माइनिंग, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जांपल जियोलॉजी, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल. तो इस तरह के सारे लोगों को मिला करके इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना चाहिए. व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज safety issues can arise from any of the activity. I have already told you that there may be physical hazards, there may be biological hazards, there may be chemical hazards. So try to correlate all those things. So इसका मतलब है कि इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिसिप्लिन के लोगों को होना चाहिए, not just mining, right? Because hazard can derive from any of the activity. The safety officer at the mine level being a specialist staff to the mine manager should not be. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिए कि सेफ्टी ऑफिसर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ आईएसओ. should not be the part of ISO. Very, very important. Please remember, safety officer should not be part of ISO. Plus, any person who is involved in production should not be the part of ISO. ऐसा क्यों है बताओ? Why do you think that any person involved in production should not be the part of ISO? क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं देगा. The person who is responsible for production will always try to increase the production. And in that case, he may neglect the safety provisions. That is why it is written that any person who is in the production line should not be the part of ISO, right? So these are the functions of ISO. Very easy things are written. आप एक बार वापस पढ़ लीजिए. And these are very easy things written. Language simple है, बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हो. What are the functions of ISO? Formulation of safety policy at corporate level, effective monitoring of state of implementation of policy directive on safety, periodic inspection of mine for assessing safety, status of safety, inquiry into all accident and dangerous occurrences, and all those two things are written. So you can read this. I'll save the slide. Okay, so we move ahead. This is the next question, which have been asked by DGMS. No program of safety can be successful Okay, so no program of safety can be successful unless the company has assistance from State Safety Council, assistance from DGMS, private safety organization, internal safety organization, and all. देखो ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑल आपने सही जवाब दिया, ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऑल आंसर नहीं है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द आंसर, देन आई विल गिव यू द ट्रिक. Okay, first of all you write the answer, then I'll give you the trick.
ओके, नाउ लिसन, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऑल ऑफ दीज आंसर हो तो आपको टिक करना है, आप 8 में 10 में 8 बार सही होंगे। अगर आपने यहाँ पे ऑल ऑफ दीज टिक किया तो आपका आंसर क्या है? गलत है। ठीक है? और ठीक है, देखो मतलब मैंने आपको ट्रिक तो बता दिया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, साथ में साथ आपको विजडम भी लगाना है। आप ये बताओ, आपने इतने दिन से यू मस्ट बी रीडिंग अबाउट माइनिंग फॉर लास्ट एटलीस्ट वैसे तो आपने काफी दिन से पढ़ा है, एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए 2-3 महीने से पढ़ रहे होगे ना। कहीं भी एट एनी वेयर हैव यू रिटन दिस वर्ड प्राइवेट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन? कहीं पढ़ा है आपने प्राइवेट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? किसी भी बुक में, किसी भी क्विज में, किसी भी व्हाट्सएप मैसेज में, कहीं पे भी इंटरनेट पे प्राइवेट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा। तो जब नहीं पढ़ा प्राइवेट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑल आंसर हो ही नहीं सकता, है ना? इफ यू हैव नॉट रेड एनीवेयर अबाउट प्राइवेट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, आंसर कैन नॉट बी ई। ओके, नाउ सेफ्टी स्टेट सेफ्टी काउंसिल किसी ने कहीं पे पढ़ा है? मैंने तो इतने दिन से पढ़ रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला कहीं। ओके, सो असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट सेफ्टी काउंसिल, देयर इज नथिंग लाइक स्टेट सेफ्टी काउंसिल। मुझे नहीं पता जिस करता भी कि नहीं करता है। ऑलराइट, सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ ईदर बी और डी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मेन एग्जाम में अभी हम इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो हो सकता है कि आपने डी आंसर टिक कर दिया होगा। बट मेन एग्जाम में जहां पर क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ऑल टॉपिक्स, इट इज पॉसिबल दैट यू मे नॉट बी एबल टू टिक ईदर बी और डी। डी इज द ऑफिशियल आंसर ऑफ डीजीएमएस, सो आंसर इज डी, राइट? बट आई स्टिल बिलीव, मैं ये मानता हूं कि ये क्वेश्चन एटलीस्ट बी और डी में आकर के 50-50 चांस था कि आधे लोग सही करेंगे, आधे लोग गलत करेंगे। आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप डी सही कर सकते थे। ओके, सो बी और डी, बट स्टिल एटलीस्ट 50% पे तो पहुंच गए थे ना, राइट? सो आंसर इज ऑफ कोर्स डी। व्हाई? बिकॉज डीजीएमएस has provided it. All right, the next topic is safety audit. सब सेफ्टी ऑडिट पढ़ने के पहले आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग व्हाट इज ऑडिट। व्हाट इज ऑडिट? अच्छा, ये ऑडिट वर्ड ना ऐसा थोड़ा सा ना नेगेटिव सेंस में आता है। आप जब काम करते होंगे ना, ऑडिट जैसे ही सुनते हुए थोड़ा डर लग जाता होगा कि यार ये ऑडिट क्या है, मतलब निगेटिव सेंस में आता है कि ऑडिट, अच्छा ऑडिट हो रहा है। सो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट, आप you have read about CAG, right? Okay, you have read about CAG. So what is audit? Audit is कि जो काम आपने किया वो कैसा किया। जब इसी चीज को हम एनालाइज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑडिट। ओके, व्हेन यू एनालाइज ऑल द थिंग्स, लाइक आपने माइंस पे कुछ परचेजेस किए, आपने परचेजेस में यू हैव स्पेंड सम मनी। सो व्हाट ऑडिट पीपल विल डू? ऑडिट पीपल विल डू what quality of material you have purchased, is the price which you have paid for something is appropriate or not। आपने कुछ परचेज किया, महंगा तो नहीं परचेज कर लिया, आपने सही परचेज किया भी कि नहीं किया। तो ये सारी चीजों के लिए ऑडिट किया जाता है, फाइनेंशियल ऑडिट। ओके, दिस इज रिगार्डिंग सेफ्टी ऑडिट। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, नाउ यू कैन रीड इट। Safety audit is a structured process that is used to collect information related to company's efficiency, effectiveness, reliability and safety. ओके, दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट, कि आप कंपनी का ना एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रिलायबिलिटी और सेफ्टी को लेकर के जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है उसके आधार पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यू ऑब्जर्व द प्रोसेसेस, वर्क एनवायरनमेंट, कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर डिटेल्स टू गेज दिस क्वालिटीज। ठीक है, तो सेफ्टी ऑडिट मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो सेफ्टी जो प्रोसीजर्स है या सेफ्टी के जो भी प्रोविजंस माइंस पे इनैक्ट किए जा रहे हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं, आर दोज एप्रोप्रिएट, कि कल को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या वो जो प्रिकॉशंस ऑलरेडी इन प्लेस है, विल दैट बी यूजफुल और नॉट? इफ दैट विल बी यूजफुल देन इट्स ओके, इफ दैट विल नॉट बी यूजफुल मींस देयर आर सम करेक्टिव स्टेप्स रिक्वायर्ड। Okay, so that is done through auditing, safety auditing. But always remember that in safety audit, all other things like efficiency, effectiveness, reliability are also involved. Processes are involved, work environment are involved, equipments are involved. तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में कि सिर्फ जब सेफ्टी की बात करें तो आपका दिमाग ओनली सेफ्टी के ऊपर जाए। नो, सेफ्टी इंक्लूड्स द इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ऑल दोस थिंग्स। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया ना,
ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में सेफ्टी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू एनालाइज ऑल द एस्पेक्ट. ओके, पूरा का पूरा पूरे होलिस्टिक प्रोसेस को आपको देखना पड़ेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी या अथॉरिटी से होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? इफ सपोज आई एम द मैनेजर ऑफ माइन एंड आई डू द ऑडिट ऑफ द माइन, तो क्या मैं कभी बोलूंगा कि खराब है? कुछ भी कभी नहीं बोलूंगा. तो इसलिए दैट इज व्हाई ऑडिट इज इट इज डिजायरेबल टू कंडक्ट ऑडिट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एजेंसी और अथॉरिटी जो इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल होके चीजों को वेरीफाई कर पाएगा. ओके, अगर सेफ्टी ऑडिट में रेटिंग 80% से ज्यादा है तो सेफ्टी इज गुड. इफ रेटिंग इज लेस देन 80% then improvement is required. Okay, so this is about rating, safety rating. If it is more than 80%, then you are doing well. If it is less than 80%, then some improvements are required. Okay, this is a small diagram regarding audit. You can see this. Identify the standards, collect data, compare to standards, plan and implement changes, then monitoring and re-audit, और फिर से identify the standards. Simple सी चीज बता रहा हूँ आपको कि audit मतलब ये होता है कि जो भी चीजें इन प्लेस है क्या वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है. कल को अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विल दोज प्रिकॉशंस बी like sufficient or not sufficient. So that is done in safety audit. Okay, so we are almost coming to the close of the lecture, but I have already told you ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा. Okay, so tripartite committee, tri means तीन होता है ना. So tripartite means there will be three party to it. Who are those three party? Three parties are management, government and trade union. तीन तरह के लोग हैं जो ट्राइपार्टाइट कमेटी के मेंबर्स होते हैं. नंबर 1 is management, number 2 is government, number 3 is trade union. Okay, I have written something regarding National Safety Conference on mines because National Safety Conference is a tripartite committee. Okay, example of tripartite committee is National Safety Conference on safety in mines, right? So now I have written something about National Safety Conference. National Safety Conference is a standing committee. See, there are two things: the standing and ad hoc. I think in WhatsApp group I have written somewhere. So there are two types of committee: standing committee and ad hoc committee. What is the difference between standing committee and ad hoc committee? Standing committee means permanent committee. Ad hoc committee means temporary committee. Suppose a committee is formed for one specific task. कि ये काम कमिटी का काम है, जैसे ही वो काम खत्म होगा committee will be dissolved. So that is called ad hoc committee. But if there are some committee which is continuous, मतलब वो हमेशा के लिए exist करती है, then that is called standing committee. So that is the difference between standing and ad hoc. Standing means permanent, ad hoc means temporary committee that has been made only for some specific purpose. But if that purpose is completed, committee will be dissolved. Okay, so National Safety Conference is a standing committee. National Safety Conference is the highest tripartite forum at national level. Highest tripartite forum at national level for deliberation on issues connected with safety and health in mines. Very simple line. National Safety Conference. This is important. This is important, and DGMS can ask it any day. Means कभी भी exam में पूछ सकता है. National Safety Conference was first started in 1958. It was started in 1958 after a disaster at Chinakuri Colliery, right? So after disaster at Chinakuri Colliery, first National Safety Conference was started in 1958. And you already are aware that ab tak there are total 12 National Safety Conference that has happened. Okay, so till today 12 National Safety Conference has happened. So this was about tripartite committee. What is bipartite committee? Bipartite committee involves only two people, management and workers. Means there is no government. Government इसमें part नहीं है. No government is part of bipartite committee. Bipartite committee involves only management and workers, right? Examples are these two. Pit safety committee, best example is pit safety committee. आपको पता है pit safety committee में only management and workers are there. There is no DGMS or there is no other agency of the government, right? Other example is joint bipartite committee of coal industry. इसी तरीके से metal industry का भी है. And there are a lot of committees in like mining sector, like metallurgy sector. So all those things are there. You have to just understand that tripartite committee consists of three parties: government, management and workers. Bipartite committee consists of two parties: management and workers, and there is no government involved in bipartite committee, right? This is the question: which of the following
monitors this safety in mines? Options are ISO, WI is workman inspector, safety committee, option A and B, option A, B and C. Okay, so give the answer to this question. NSE I have written now, already 12 national safety conferences taken place. That was already written in the slide. Okay, so it is, literally I'm very delighted to see most of you people are answering it right, and of course answer is E. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर क्वेश्चन का सही जवाब दिया है. I tell you, I challenge you कि अगर आप इसी तरह से एक्टिव रहोगे, you shall definitely qualify this year exam. क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट है ही नहीं, बस हवा बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते, बहुत सारे नंबर लेके आते हैं. Right? Someone was asking that how many number of national safety conferences taken place. I have already written here that there are 12 number of safety, national safety conference that has already happened. Okay, अब तेरामा होने वाला है. Answer was E. Okay, this question was easy. We have almost come to the last of our topic. This is a word which was written in the syllabus, trap. So trap का full form क्या है? What is the full form of trap? Is take responsibility in accident prevention. Take responsibility in accident prevention. Right? Take responsibility in accident prevention. अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजों को ना मत पढ़ो पहले. You just try to read the lines. Take responsibility. मतलब सबको अपनी responsibility लेनी है. In accident prevention. किसी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ड्यूटी ऑफ केयर भी तो वही था कि आपको अपने लिए प्लस दूसरों के लिए अच्छे से काम करना है, कोई एक्सीडेंट ना हो. देन अगेन इट इज रिटन हियर दैट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन मींस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ताकि एक्सीडेंट ना हो. राइट? इट डिस्कसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. और ये किसके ऊपर लागू होगी? सबके ऊपर लागू होगा. It will be applicable to individuals, it will be applicable to supervisors, and it will be applicable to institutions like DGMS, like company, सबके ऊपर लागू है. It is a responsibility of everyone to prevent the accident. It is a proactive program. What is the meaning of proactive program? What is the meaning of proactive program? Proactive कहने का मतलब है कि आपने खुद से पहले ही काम कर लिया. आपने खुद से पहले ही काम कर लिया. Okay, Himanshu asked this question after the class. How many members are there in the tripartite committee? Okay, so TRAP is a proactive program. Proactive program means ये एक्सीडेंट होने के पहले करते. ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा फिर करेंगे. मतलब हम अपने आप को इतना we have made ourselves so much conscious that we have to try to prevent the accident. Okay, एक्सीडेंट होने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है. फिर तो जो हार्म होना है वो ऑलरेडी हार्म हो जाएगा. So that is why TRAP is a proactive program. Means you should take responsibility so that no accident happens. इतना तो आप कर सकते हो. Natural reason से हो गया तो हो गया, उसको आप रोक नहीं सकते हो. But still, you shall try to do all your functions in such a way that you minimizes the chances of accident. It is an employee-driven program. Means employees are a major force behind this program. That involves workers, supervisors, management. मैंने पहले ही बोला सबको इन्वॉल्व करना है. The emphasis of this program is not on analyzing accident which has already happened. इस प्रोग्राम का emphasis ये नहीं है कि जो एक्सीडेंट हो गया उस कैसे हुआ, but on the capturing near miss information or identifying existing traps which have produced injury or lost time events. मतलब क्या हो रहा है? मतलब यही है कि ऐसा जो एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में हमें नहीं चेक करना है. उसके लिए तो फिर एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होगा and there are a lot of other mechanisms are available. But ट्रैप इज अ प्रोएक्टिव प्रोग्राम जिसमें एक्सीडेंट होने के पहले यू वर्क. एक्सीडेंट होने के पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. राइट? सो ट्रैप इज अ प्रोएक्टिव प्रोग्राम. एक्सीडेंट के पहले जो हम काम कर रहे हैं ना, क्या कर सकते हैं बताओ? जैसे मान लो कि किसी सामान को सही जगह पे रखना है. अगर इक्विपमेंट है उसका मान लो मेंटेनेंस करना है तो मेंटेनेंस होना चाहिए. किसी को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इक्विपमेंट चल रहा है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए. डंपर है, डंपर का मेंटेनेंस नहीं कराओगे, चलाते रहोगे तो हो सकता है कि ब्रेक डाउन हो जाए. लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका ब्रेक फेल हो जाए और 2-4-5 लोगों को जाके टकरा जाए. पॉसिबल है ना? तो इसका मतलब है कि ट्रैप मतलब कि अब डंपर ऑपरेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर डंपर का ड्यू है मेंटेनेंस तो वो पहले मेंटेनेंस कराए फिर डंपर चलाए. राइट? आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट
that it is the responsibility of every person who are employed in the mine to perform their functions for which he is designated. कोई कैजुअल नहीं, कोई भी कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए, या कोई एक्सीडेंट जस्ट होते होते बच गया तो आपको पता करना है कि वो एक्सीडेंट क्यों हो सकता था. ओके, सो दिस इज अ प्रोएक्टिव प्रोग्राम, पहले करते हैं. ऑलराइट, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय DGMS. Who shall have to provide safety and proper discipline of person employed in mine? Manager and assistant manager, owner, agent and manager, safety officer, welfare officer, mine management and agent. Okay, so give the answer. A lot of you people are answering B. So again, this is very easy question. Answer is of course B. Again, it has been asked by DGMS, right? Okay, thank you. This is the last topic for today, standard operating procedure. फिर से मैं बोलता हूं कि before you study, read all these lines, just read the heading, standard operating procedure. Okay, means something has been standardized कि इसी तरीके से करना है. For example, I tell you, suppose a driver is running dumper. अब डंपर तो एक गाड़ी है, उसको तो 100 किलोमीटर की स्पीड से भी दौड़ा सकते हैं, 200 किलोमीटर की स्पीड से भी मे भी दौड़ा सकते हैं, और 50 के स्पीड से भी दौड़ा सकते हैं, और एप्रोप्रिएट जो स्पीड है उस स्पीड पे भी दौड़ा सकते हैं, राइट? सो देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड्स which must be written that if dumper is there, if it is unloaded, it should run at this speed. If it is loaded, then it should run at this speed. Clear? अब डंपर है, 40 किलोमीटर की स्पीड से उसे भगाना है, आप कोई 100 किलोमीटर की स्पीड से भगाने लग जाए, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ना, राइट? सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, a step by step instruction compiled by an organization to help workers carry out routine operation. Okay, simple सी चीज है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट लेवल से कि ऐसा ही काम करना है, टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट रूटीन ऑपरेशन. रूटीन ऑपरेशन को इसी वे में करना है, टू अचीव इफिशियंसी, क्वालिटी आउटपुट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस while reducing miscommunication and failure. Right? Standard operating procedures means किसी पार्टिकुलर टास्क को इस स्टेप में इस तरीके से परफॉर्म करना है ताकि एक तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, और साथ ही साथ एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स आर रिटन इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. So we have almost finished. These are two different miscellaneous questions which I have written that SIMTAR stands for. Okay, so you can write the answer. What does SIMTAR stand for? Subham has asked why safety officer not included in ISO. I'll tell you. Okay, so this is a miscellaneous question which have been asked. SIMTAR stand for the strategy in mine testing and research station, the safety in mines testing and research station, the safety in mines testing and review station, the safety in mines testing and recording station, and none of the awesome. Okay, so of course answer is B. Most of you people have answered it correctly. This is the last question for today. L1 Q2 lecture 1 question number 20. SIMTARs belong to which organization? New South Wales government, Victoria government, Queensland government, South Australia government, none of the option. Answer, you people have of course seen this question in the quiz. So answer is Queensland government. Answer is C. Answer is C. Right? All right. So I guess only 2 slides are left for today now. This is a miscellaneous topic again. National Safety Award, NSA Award. I have written all the things. You can read it here. National Safety Awards are given to mines every year. सबसे पहले तो every year दिया जाता है. By Government of India. DGMS नहीं देती, कोई particular coal company नहीं देती, metal company नहीं देती. It is given by Government of India to best performing mines on parameters of performance of safety. Okay, नाम से clear है. Safety Award तो ये parameters of safety के लिए दिया जाएगा, right? Every year दिया जाता है, Government of India के द्वारा दिया जाता है.
two schemes, longest accident free period and longest injury frequency rate, lowest injury frequency rate. इन दो अलग अलग सेक्शन में अवार्ड दिया जाता है कोल, नॉन कोल एंड ऑयल माइंस को. ओके, सो दिस अवार्ड इज गिवन टू coal, non-coal and oil mines separately. All mines are eligible to contest for National Safety Award mines. All the mines are eligible. Details of production, man shift, accident details of last 3 years, including contest year. ये 3 साल का डिटेल्स को क्या होता है, 3 साल का डिटेल्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जो आपको सबमिट करना होता है. और लॉन्गेस्ट एक्सीडेंट फ्री पीरियड मतलब एक्सीडेंट फ्री पीरियड मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसका सबसे बड़ा समय होगा, या इंजुरी फ्रीक्वेंसी रेट बहुत कम है, बहुत कम इंजुरी होती है, तो इसका मतलब दोज माइंस आर नॉर्मली सेफ टू वर्क. वन माइन वन प्राइस मींस एक माइंस को एक ही प्राइस दिया जाएगा. अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया के लिए भी वो अगर क्वालिफाई कर रहा है फिर भी एक ही प्राइस दिया जाएगा. ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर माइन को ही बहुत सारा हर तरह का प्राइस दे दिया गया, ऐसा नहीं. वन माइन वन प्राइस, राइट. आई हैव रिटन ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हियर. This is role of information technology in mines. So you already know that time is changing. The concept of information technology बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है. So preventive measures मतलब कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्सीडेंट को होने से बचा सकते हो, या अगर एक्सीडेंट हो गया तो जल्दी से रिकवरी कर सकते हो. पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जनरली नहीं होता है. ओके, सॉफ्टवेयर किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, डाटा फीड करके आप डाटा को एनालाइज कर सकते हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है आज के डेट में बहुत सारी चीजें हो रही है, नई नई चीजें हो रही है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताऊं. सो इफ यू आर स्पीकिंग एंड गूगल राइट दोज वर्ड्स, अगर आप बोलते हैं और गूगल उसको टाइप कर देता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है. ठीक है, तो यूज ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, या रोबोट हो गया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या डाटा एनालिटिक्स हो गया, इन सारी चीजों को सेफ्टी बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है. कोई बहुत स्पेसिफिक चीज नहीं बनती है इसके ऊपर. एग्जाम्पल ये कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं. माइंसिस बिल को कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं. पूरा आप जान ही रहो, पूरा टाइम ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, राइट. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. क्लियर? आई होप यू मस्ट एंजॉय द क्लास. कुछ डाउट्स है तो अब जिनको आप जाना चाहते हो. मिसलेनियस मतलब क्या होता है? मिसलेनियस मतलब कुछ जो स्पेसिफिक नहीं है, जेनरिक बोल सकते हैं. यस, जेनरिक बोल सकते हैं, राइट. Himanshu ka question now. Okay, now I shall take questions of people. Today's class was free for all. From tomorrow the class will not be free for all. अगर आपको फिर भी ज्वाइन करना है, ज्यादा लोगों को मैंने ऑलरेडी मना कर दिया है, अब ज्यादा लोगों को हम नहीं ले सकते हैं. बट स्टिल अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यू ट्राई टू कॉल ऑन दिस नंबर. ओके, यू ट्राई टू कॉल ऑन दिस नंबर 9971114020. बट चांसेस यही है कि हम नए लोगों को अब नहीं लेंगे. बहुत ज्यादा किसी को रिक्वायरमेंट है तो हम सोच सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लेंगे. क्लियर? हिमांशु, शुभम. ओके, अब जिनको भी क्वेश्चन पूछना है ना, यू जस्ट चैट बॉक्स में आप लिख दो, सो आई गिव द आंसर, राइट. जिनको हो चुका है वो आप जा सकते हो. द क्लास इज ओवर. कुछ डाउट्स होंगे, मैं डाउट्स क्लियर करूंगा. 6:30 बजे से ट्राई करेंगे definitely. You will get the video link for this class because this class was free for all. You will get the PDF also because this class was free for all, right. कुछ questions थे. Okay, all those people who are having questions, please write in the WhatsApp group. I'll clear everything there, right. So I'm closing the video. I'm closing the class. Hope you enjoyed the class. If you want to join, अगर आप join करना चाहते हो, ज्यादा लोगों को हम नहीं लेंगे, but still I tell you what is the number. पहले इस स्लाइड में आपको I have given you the number. You can note down the number 9971114020. If you want to join, okay, this is the number again. So if you want to join, you can call on this number 9971114020. I will upload this video on YouTube. Okay, in the YouTube comment section, I'll give the WhatsApp group there. You can join and you can get the PDF. Right? Thanks a lot for everyone. Thanks a lot to everyone. होप यू एंजॉयड द क्लास. मुझे भी बहुत मजा आया पढ़ाने में, ऐसे भी मजा आता है. मैं बस चाहता यही हूँ, मैंने पहले ही बोला, इस बैच का एम ही है 100% लोगों को क्वालिफाई कराना, किसी को भी फेल नहीं होने देना है. इतना मैं इंश्योर करूंगा, इतना मेहनत आपसे करवाऊंगा कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. ठीक है,
तो आई वर्क, ऑफ कोर्स आई वर्क, एंड आपसे भी बहुत मेहनत करवाने वाला हूं मैं. तो दिस विल नॉट बी अ इजी जर्नी, इंटरेस्टिंग जर्नी, बट नॉट विल बी अ इजी जर्नी. एनीवेज 2-3 महीने पढ़ लेते हो, अगर आप फर्स्ट क्लास मैनेजर बन जाते हो, दैट्स अ ह्यूज प्राइड. बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. तो इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि आप मेहनत कीजिए और फर्स्ट क्लास के एग्जाम, सेकंड क्लास के एग्जाम पास कीजिए. लिटरली बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा अगर आप पास करेंगे तो. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.